Breaking news on your screen. Lucknow DM says Samajwadi Party's induction event without permission. Massive crowd at Samajwadi Party's event to induct BJP rebels. The BJP accused SP of violating Election Commission norms and demanded action against Samajwadi Party. Samar Srivastav joining us on this. Samar, take us through the latest on ground. A huge rally. We've been seeing the visuals. We've been speaking to you through the day as well. Tell us all the latest. The Election Commission COVID norms to violating. This is what BJP claimed. This is what BJP said. That Samajwadi Party even has violated the COVID norms despite model code of conduct 24. And in the latest PC of Election Commission, it was said we cannot hold any program without the permission of DM. And for campaigning, you have to go with max 5%. But in Samajwadi Party office, where I'm reporting from, more than around, what I saw, more than 200 persons were arrived at this particular place, and that is why DM Lucknow is saying that he has no knowledge about this particular program. And as for him, SP did not inform DM Lucknow Abhishek Prakash, and he said that an inquiry will happen and some strict action will be taken against the party. And BJP obviously claiming that the Samajwadi Party, at the time when model code of conduct is on, already been announced in the state. At that particular time, the event held at Samajwadi Party office, where hundreds of workers of Samajwadi Party arrived. And so this is a big thing coming in because it was expected, as Maurya claimed, that he wanted to hold a big rally with a lot of supporters, but it did not happen due to COVID protocols. But despite COVID protocols, the entire premises here on the voting ground of Samajwadi Party was full of workers. Many of them were not even during masks. This is what BJP has claimed, and this is what BJP has said, as far as the Election Commission, there is no not going to be working whether Election Commission and what kind of... All right, now, Samarth, we'll continue to come back to you. Despite an AC ban on conducting mega rallies due to the third wave, a sea of crowd was seen at Samajwadi Party's event to induct BJP rebels in Lucknow. In these images, it can be seen that the crowd forgot that COVID still persists and went about violating norms. The BJP accused them of violating Election Commission norms and demanded action against the Samajwadi Party. Lucknow District Magistrate, speaking to India Today, said that the SP rally was conducted without any prior permission. ये किस प्रकार की वर्चुअल रैली है जिसमें इस प्रकार से भीड़ को बुलवाकर और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बार बार कोविड की लड़ाई में आड़ंगा लगाने के लिए, रोड़ा अटकाने के लिए कभी बीजेपी की वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को कहा। आज उस उत्तर प्रदेश की कोविड की लड़ाई को कमजोर करने के लिए भी एक प्रकार से इस रैली को किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करनी चाहिए। That's the brewing story there. You can see the kind of crowds at the SP rally as they induct a spate of ministers that have been resigning from the BJP party in Uttar Pradesh, claiming that there will in fact be further resignations over the next 3-4 days. They're coming thick and fast, and we are seeing that induction ceremony, as you can see on your screen, with no prior permission having been taken from the Election Commission. BJP saying this is a very blatant flouting of rules, particularly at a time when the country is reeling from a third wave. Amit Malviya of the BJP joining us on the phone line. Amit, take us through really the BJP stand on this, how the SP has managed to put together a rally, at a time when the Election Commission has set forth some pretty clear rules. Well, this is not the first time that the Samajwadi Party and its leaders have made a mockery of the COVID protocols. In fact, Akhilesh Yadav, the chief of Samajwadi Party, has on several occasions gone on record to say that he is someone who hasn't taken the vaccine and he does not believe in taking, and therefore he has put lives of several of his followers and people who may take him seriously in peril. And now, despite strict guidelines from the Election Commission very clearly outlining how political parties must conduct themselves, you have the spectacle put up by the Samajwadi Party where all COVID norms are flouted.
it really shows how responsible they are as a party and as a leader. And perhaps people of Uttar Pradesh will take this into account when they go to vote. All right, Amit, thanks for that quick take on the SP rallies currently taking place. It's a politically charged Friday. This is in poll bout Uttar Pradesh. After dumping Yogi Adityanath-led government, 14 BJP leaders, including 2 former ministers and 5 BJP MLAs, joined Samajwadi Party in presence of Chief Akhilesh Yadav. India Today has learned that former UP minister and BJP leader Dara Singh will join on the 16th of January with his camp of MLAs. BJP ally Apna Dal MLA Chaudhry Amar Singh also joined SP in Lucknow today. Former UP minister Dharam Singh has proclaimed that at least 1 minister and 3 to 4 MLAs will resign every day from the BJP until the 20th of January. लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। जब जब चुनाव आते हैं इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। अभी देखिए आज तीसरा दिन है, इस्तीफा देने का आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। Now, amidst the mass exodus, Chief Minister Yogi Adityanath had lunch with Dalit family in Gorakhpur. The Chief Minister sat on the floor and had the traditional khichdi. मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। इस समता भोज में खिचड़ी भोज, जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। Breaking news on your screen. Congress's Ladki Hu Lad Sakti Hu campaign poster girl alleges irregularities in ticket distribution, denied Congress ticket. Women outreach poster girl Priyanka Maurya alleges bribes for poll tickets in Uttar Pradesh. Priyanka Maurya accuses Congress of cheating in the name of the Ladki Hu Lad Sakti Hu campaign. That's the latest on your screen. These allegations. Let's actually go across and listen in to what she's saying. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे पे कई महिलाओं को टिकट दिया, जिसके बाद से चर्चा होने लगी। हालांकि इसमें एक नाम था प्रियंका मौर्य। प्रियंका मौर्य लखनऊ की रहने वाली हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोस्टर गर्ल भी रही हैं, जिनका फ्रंट में फोटो भी छपा हुआ था। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, उनकी विधानसभा से टिकट किसी और को दे दिया गया। साफ तौर से प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से
उनसे स्क्रीनिंग की गई, उससे बातचीत की गई थी, टिकट के लिए बात कहा गया था और एंड मौके पे उनके चेहरे को यूज किया गया और उसके बाद आज अलग कर दिया गया। क्या है पूरा मसला उनसे खुद जानते, हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका मौर्य जी। प्रियंका जी, किस तरीके से क्या सिचुएशन हुई और कैसे आप पोस्टर पहले इस पे आई? देखिए, ठीक तरीके से कहा जाए तो मेरे फेस का आई एम ओबीसी गर्ल उसका इस्तेमाल किया गया। ये है मेरी फोटो, मेरा पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मेरे समाज में लोग बहुत खुश थे, महिलाओं में एक उत्साह था कि मुझे ये जगह दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और नो डाउट राजनीति में एक बदलाव आएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, सोशल वर्क भी किया करती हूँ। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं राजनीति में आके मेरे हैंड्स जो हैं उनकी ताकत बढ़ेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सोच करके मैंने राजनीति में कदम रखा था। लेकिन इट वॉज ऑल प्री डिसाइडेड कि किसको टिकट देनी है, बिकॉज हमारे साथ हमने आवेदन किया। हमारे आवेदन के बाद जो आवेदन आया उसको पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको यहाँ ज्वाइन करवाया गया और सब ये बोलते थे कि इन्हीं को टिकट मिलेगी। लेकिन मैं इस आस में लगी रही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मेहनत करूंगी तो मेरे वर्क को देखा जाएगा और उसके आधार पे टिकट दिया जाएगा। हमारी स्क्रीनिंग हुई, मेरे साथ 24 प्रत्याशी टोटल प्रत्याशी थे, सबकी स्क्रीनिंग हुई, सबसे बूथ कमेटी की लिस्ट मांगी गई और ऑब्जर्वर्स भी आए। कहा गया ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये टिकट दिया गया है। तो मैं ये बता दूं कि ऑब्जर्वर्स ने सबसे पहला नाम मेरा रिकमेंड किया था, ना कि उसका जिसकी टिकट जिसको मिली है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया है, मेरे नाम को इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया पे मेरे 10 लाख फॉलोवर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, मुझे मोहरा बना करके, मुझे फेस बना करके टिकट तो हमसे वोट तो लेना चाहते हैं ओबीसी समाज का, लेकिन टिकट देने में इन्हें प्रॉब्लम थी। इसलिए 170 सरोजनी नगर की जो सीट थी, जो विधानसभा थी, उसका टिकट किसी और को दिया गया, जो कि Politics over the Alwar rape incident intensifies. The BJP is questioning Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra's silence over the alleged gang rape of a differently abled minor girl in Rajasthan. No arrest has been made so far in the incident. Taking on Priyanka Gandhi Vadra, the BJP said the incident exposes the hypocrisy of the opposition party, which talks about women empowerment in poll-bound Uttar Pradesh. The state unit of BJP has also formed a committee to seek justice for the victim. BJP leader Alka Gurjar slammed Priyanka and said that Congress is raising "Ladki hu, lad sakti hu" slogan in Uttar Pradesh, but in Rajasthan, Priyanka Gandhi is coming for jungle safari to watch the tiger. She further added that Priyanka is oblivious to jungle Raj prevailing in the Congress-ruled state of Rajasthan. Meanwhile, Women Development Minister of Rajasthan, Mamta Bhupesh, has stoked controversy. She blamed society for rapes and said that government cannot stop the Highness Act all by itself. कि ये सब चीज़ें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं ना कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज़ मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो हम सब लोगों को भी अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल, एक बच्चों के प्रति इज्जत, श्रद्धा और एक पारिवारिक माहौल बनाने के अंदर सबकी मदद की आवश्यकता है। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक बात है, जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। निश्चित रूप से अशोभनीय, निंदनीय, अक्षम्य घटना है और राजस्थान की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी सरकार सोई हुई है। निरंतर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इनकी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो बाघ देखने के लिए जंगल में घूमने के लिए आ रही है, लेकिन राजस्थान में जो जंगल राज है
उसकी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया है। राजस्थान के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक बार नहीं अनेकों बार घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन सरकार इन घटनाओं से सबक नहीं ले रही है। एक और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता ये कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। देश की जनता भी देख रही है। आप राजस्थान के अंदर हो और राजस्थान में होने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर घटना घटित होती है, आपके श्रीमुख से एक शब्द नहीं निकलता है। इस मुद्दे को हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसको संवेदनशीलता के साथ हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कम से कम सरकार कुंभकर्ण की नींद के अंदर सोई हुई है, वो जगे और इसके ऊपर गंभीरता से ले। The verdict in one of Kerala's most anticipated cases is out. The Kottayam Additional Sessions Court acquits Bishop Franco Mullakai, clearing him of all charges in the Kerala nun rape case. After 36 months of trial, Bishop Franco was declared not guilty by the Sessions Court. The bishop was accused of allegedly raping a nun at her convent several times between 2014 and 2016. The case dates back to 2018 and the verdict comes as a big setback for the Save Our Sisters campaign. The 3-year-long legal battle may now extend if the nun who accused the bishop of rape approaches higher courts. The nun filed a complaint in 2018, after which several nuns from the convent protested against the bishop levelling allegations of sexual assault against him. The bishop, who was present at the court for the hearing, said, "Praise the Lord," as he stepped out of the Sessions Court in Kottayam. ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിലുള്ള വിധി ഭൂമിയിലെ കോടതിയിൽ വരട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമുണ്ടെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മിഷനറിയെ ഞാൻ. അതിന് ദൈവം അവസരം തന്നു. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരും എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫലം ഉള്ള മരത്തിൽ കല്ലെറിയും. അതിൽ അഭിമാനമുള്ള സന്തോഷം. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു വിധിയല്ല ഇത്. നമുക്കൊക്കെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഭീഷണിയിലാകുകയാണ് ഈ ഒരു വിധിയിലൂടെ. ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ്, ഈ കേസ് കൊണ്ട് അപ്പീലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് ലൗകികമായി ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ സംശയാസ്പദവും ഖേദകരവുമാണ്. This verdict is, I am saying that the success of the truth, nothing more success. From the beginning onwards, we can see that it's a concocted case. It is put up by the police officers and certain other anti-national elements also backing there, and they were put up this case and bringing us to attack the Christianity, not against attack that a particular bishop. Just we can see that they want to make a rift between nun and bishop and nun and priest. Higher courts, when we go also, we will stand with the sister till she get justice. Already it was the same earlier also, that we have suffered a lot and still it may be continuing, and we will be here and we will support the sister. Sister, if the bishop was convicted today, do you think the church would have accepted the verdict? May not be, the church may not be, because every time it happens that when the people have the money, the power, then everything can be bought. So here also we feel that this judgment also had been happened by bribing with the money. We are completely shattered and dismayed. SOS, Save Our Sisters, will continue to support them in all their way. We will support and we will look into the judgment, how to get justice to these particular sisters. My colleague Sneha Madani explains what it means now that Bishop Franco has been acquitted. Well, now that Bishop Franco Mullakai has been acquitted, what does this really mean? Here's what we know. This verdict comes as a big blow to Save Our Sisters campaign. This verdict also means that the 3-year-long legal battle may just get extended if the nun here can approach a higher court.
Now, days before Republic Day, there's been a big security scare in the national capital region. An improvised explosive device was recovered from an unattended bag found at the Ghazipur flower market in East Delhi. Police and bomb disposal squad were rushed to the market after the suspicious bag was spotted. Special cell officials were at the spot and the elite counter-terrorism force NSG was also called in. The NSG conducted a controlled explosion to neutralize the IED. Around 1.5 kilos of explosive material was found, a sizable quantity capable of dealing some heavy damage. An investigation has been launched into the incident. A case has been registered in the Delhi Police Special Cell under provisions of the Explosive Act. Let's take a break. When we come back, Union Minister Hardeep Puri speaks exclusively to India Today's Rahul Kanwal. Stay tuned for the full conversation.